हाय हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम श्योर आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर एक और अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज जूरिस्प्रूडेंस के अंदर JIGL जिसे कहते हैं। एंड जितना भी हमने कवर किया है प्लीज़ वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स के लिए। उसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम वाले दिन ज़रूर देख के जाना, सारी स्टडीज़ के साथ ये ज़रूर देख के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को देख के जाइएगा। एक ये वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। तो ये है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तरीका क्या है? वेल, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ फेडरल बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स। दैट इज हमारा इंडिया एक फेडरल स्टेट है पर यूनिटरी फीचर्स भी। एंड यस, द फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, with the few that federal features take the basic forms, दैट इज हमारे फीचर्स में इस तरह के फॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग एक साथ यूनाइटेड इंडिया में रह सकते हैं। तो यही एक यूनिटरी फीचर था जो इंडिया को अदर कंट्री से अलग करता था। एंड द फेडरल फीचर इज दैट ड्यूअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड प्रोसीजर्स। तो ये सारे फीचर्स अपने पास अपने को देखने मिलते हैं और ये हमारे सिस्टम में है। प्लस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एग्जाम में जरूर लिखना, दैट देयर आर गवर्नमेंट्स दैट डिफरेंट लेवल्स, power to make laws that are suitable amongst them. Both union and states can make law, and judiciary is independent in itself. So the judicial angle is absolutely independent in itself. तो ये बात भी यहाँ पे आती है। प्लस इसके साथ साथ ये भी याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम एंड इफ इट इज अमेंडेड इट इज ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स। तो हम लोग इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं और जब तक आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें उसको अमेंड ना करें हम अमेंडमेंट उसमें फॉलो नहीं करते हैं। Clear? So this thing, do read it. And Indian Constitution does not establish two coordinated independent governments. Both the governments coordinate and collaborate with each other. तो हमारे पास स्टेट लेवल है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और सारी गवर्नमेंट अपने आप में कोलैबोरेट करके काम करती है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द अदर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के हिसाब से देख के जाना है वो ये है, डिफाइन द टर्म स्टेट with reference to the rights which is guaranteed under the part 3 of the Constitution of India. तो Constitution क्या क्या बोलता है? Well, Article 12 के हिसाब से the state is the government and the parliament, the government and the legislature of each state, the local authority within the territory, and the expression refers to any kind of municipality, district boards, panchayat, port trust, mining and settlement boards. तो ये सब चीज़ें state के definitions के अंदर आती है. Okay, that apart, do read this. That is, Supreme Court has held other authorities which include all authorities created by the Constitution or statute on whom powers are conferred, and it is not necessary that authority should engage in performing duty. तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस राजस्थान का वर्सेस मोहनलाल के केस में। इट इज़ नॉट दैट दे शुड बी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शन टू डिक्लेयर एज अ स्टेट। इफ दे आर अ बॉडी ऑफ द स्टेट इट इज स्टिल अ स्टेट। And the expression other authorities include all those bodies which are acting as agencies of the government. So including government agencies can be held to be a state. And Kerala High Court held, since the stock exchange was independent of the government control, not discharging any public duty cannot be regarded as other authority under that. ठीक है, तो स्टेट का डेफिनेशन जरूर देख के जाइएगा, अनदर इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ ये वाला भी देख के जाइएगा, that is called the doctrine of severability. Okay, so what is this doctrine of severability? ये एक आर्टिकल 13 का आउटकम था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आती है। ये आर्टिकल क्या बोलता है? वेल, आर्टिकल 13, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज वॉइड। तो अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो अपने आप में वॉइड है, और अगर वो लॉ अपने आप में वॉइड है तो वो अपने आप को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। बट एक ब्रांच ऑफ लॉ अगर ऐसा हो जो जिसमें एक पार्ट ऑफ लॉ वाइड है लेकिन पूरा वाइड नहीं है, जैसे एक फ्रूट में अगर एक थोड़ा सा पार्ट खराब है लेकिन पूरा फ्रूट खराब नहीं है, तो कई बार घरों में वो थोड़ा सा पार्ट जो खराब है वो काट के फेंकते हैं और बाकी का फ्रूट यूज कर लेते हैं। उसी तरह
लॉ के अंदर अगर एक छोटा सा पार्ट अपने आप में वॉइड हो रहा है, वो वैलिडिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा, तो हम उतने से पार्ट को सेवर आउट करते हैं, सेपरेट करते हैं और बाकी को यूज करते हैं। तो वही था कि one thing that to be noted is that the entire law which becomes void, but the law becomes invalid only to the extent to which it is inconsistent with the fundamental right. तो एग्जाम में लिखना, so only that part of the law will be declared invalid which is inconsistent with the rest of the law. Okay, entire law nahi, only that part will be inconsistent. However, on this point of clarification has been made by the courts that the invalid part shall be severed and declared invalid if they are separable. If after separating the invalid part, the valid part is capable of giving effect of the legislature intent, then only it will survive. Otherwise, the court shall declare the entire law as invalid, and that is the rule of severability. क्लियर? एंड ये डॉक्ट्रिन अपने आप में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई भी की है। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में इसकी बारे में आया भी था। The doctrine has been applied invariably in cases where it is found to separate the invalid part from the valid part. And Article 13 only says that any law which is inconsistent with the fundamental right is void. Okay, to the extent of inconsistency. And this has been interpreted to imply that it is not necessary to strike down the whole act as invalid if only a part of the law is invalid. Okay, and in AK Gopalan versus State of Madras, Supreme Court ruled that where an act was partly invalid and if the valid portion is severable from the rest, the valid portion will be maintained provided it was sufficient to carry on the purpose. Okay, so इस तरीके से आप आंसर सुटेबली फ्रेम कर सकते हो. ओके, इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी देख के जाइएगा. यस, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स. See, the doctrine of waiver of rights is based on the premise that the person is the best judge and he has the liberty to waive enjoyment of such rights as are conferred upon him. However, the person must have the knowledge of his right to be waived off. तो आप कौन से राइट्स वेव ऑफ कर रहे हो, किस तरह के राइट्स है, आपको वो पता होना चाहिए. वेवर का मतलब होता है कि आप अपने राइट्स को अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो. याद रखना, आप अपने राइट्स के फंडामेंटल राइट्स को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते. आप अपने वो राइट्स ही छोड़ सकते हो जो आपको लीगल राइट्स के तौर पे दिए गए हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरफ में आ रहा है, एंड दैट्स, यस यू गेस्ड इट राइट, आर्टिकल 14. Article 14 of the Constitution of India says that the state shall not deny any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India. Explain with the relevant judgment. So Article 14 यहाँ पे आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो प्लीज उसमें से जरूर पढ़ के जाइएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आंसर के हिसाब से आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई any person the right of equality before the law or equal protection of law within the territory of India. It guarantees every person the right to equality before the law and equal protection of law. Okay, कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है. That's what Article 14 is all about. कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है. But yes, there can be permissible classifications because situation के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें कानून को भी suitably modify करना पड़ता है, इसलिए permissible classification आता है. ठीक है, so let's understand further and here remember this: right to equality is a declaration of equality of all persons within the territory, implying thereby the absence of special privilege in favor of an individual. So no individual will be given any kind of special privilege. Every person, whatever be his rank, whatever be his position, is subject to the jurisdiction of the court. And the second expression is equal protection of law, that directs equal protection shall be secured to all the person. Yes, equal protection has to be given to all the person as far as possible. Clear?
So equal protection will be given to all the persons within the territorial jurisdiction of Union of India in the enjoyment of their rights and privileges. So whenever they are enjoying the rights and privileges, equal protection will be given to all. Then you can also write an exam. It applies to all the persons and not only limited to the citizens of India. Okay, a corporation which is a juristic person is also entitled to the benefit of the articles. Okay, that was a famous statement in Charanjit Lal Chaudhary versus Union of India. Okay, and as a matter of fact, all the persons are not alike or equal in all respects. Application of the same law uniformly to all of them will be inconsistent with the principle of equality. We cannot have the same principle for everyone. Equals are to be governed by the same law, but there are certain unequals, and the same law cannot be complemented on every one of them. In fact, it would lead to inequality if unequals are given the equal treatment. Okay, so that's why then फिर आप समझ सकते हो then पूरा डिटेल पार्ट वही equality is a comparative part and a person is treated unequal only if that person is treated worse than the others and those others were similarly situated in the complaint. That was a famous statement in Glancock Estate case. Okay, अच्छा आपको cases के नाम अगर याद रहते हैं तो please write. If you don't remember, fine. Don't write false cases and कुछ भी ऐसा. ठीक है. And legislative classification, Article 14 ka another part, the right conferred on a person that they shall not be denied equal protection does not mean the right of the same laws for all. It is that there is a doctrine of classification. So suitable classification has been given. Supreme Court is of the opinion that there are a number of cases whereby the article can classify things in different perspectives. The differentia has to be based on some intelligible area, and you cannot deny a person a protection of law which the law should give. You cannot, but this does not mean you should forbid classification also. So classification has to be there, but the requirement of classification is based on certain premise, that is certain important principles. तो ये वो केस था सुप्रीम कोर्ट इन राम कृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर कि क्लासिफिकेशन कब करना चाहिए. That is Article 14 forbids class legislation, but it does not permit permissible classification. Now, what exactly is a permissible classification? When you do a classification, जब कुछ लोग unequals हैं, जो हमारे equals के साथ रह नहीं सकते. देखो, संसार में हर कोई एक जैसा नहीं होता. हर पर्सन की अपनी यूनिकनेस है. यहाँ तक कि आपके फिंगरप्रिंट्स भी इक्वल नहीं होते, आपके आईलिड्स के लिड्स भी इक्वल नहीं होते. तो हर कोई अपने आप में एक अनइक्वालिटी भी रखता है. तो अगर कोई अनइक्वल है और हमारे लॉ में वो फिट नहीं होता, तो suitable classification can be made, but it has to be based on intelligible differentia. You have to make it for the group of persons who are different, and the differentia has to be based on a question of a statute which has to come out. Okay, and the classification has to give that different basis. It can be geographical, it can be individual treatment, but it has to give certain basis. Okay, and even a single individual can be treated as a class in himself. Okay, and it depends on the law which is applicable, and state or country wise it differs also. Article 14 condemns discrimination, not only substantive but even by lawful procedure. There is always a presumption in favor of the constitutionality of the enactment, and the burden is upon the person who attacks it to show that there has been any kind of transgression of the constitutional principle. तो अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स गलत तरीकों से अप्लाई किए, तो आप डेफिनेटली उस क्लासिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हो. लेकिन क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स आज की तारीख में जहाँ पे परमिसिबल है वहाँ पे है. ठीक है, तो आर्टिकल 14 जरूर देख के जाइएगा. देन दिस वन, यस, write a short note on equal opportunity in public environment. Article 16, sub-article 1, it guarantees that all the citizens equality of opportunity in the matters relating to employment or appointment of the officer of the state. तो आर्टिकल 16 एक गारंटी देता है कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यहाँ तक कि 16.2 यहाँ ये भी बोलता है कि हम
इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जिस बेसिस पे कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी काइंड ऑफ डिसेंट और एनी काइंड ऑफ सेक्स वगैरह, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशंस नहीं होगा. Clear? And when a discrimination is valid, well, the parliament can make law with regard to classifications. तो पार्लियामेंट सूटेबल लॉज बना सकता है क्लासिफिकेशंस के रिगार्ड में, और वो लॉ हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे. Okay, and the provision can be made for reservations of appointments in the favor of the backward classes also. ये अपने आप में इसके exceptions हैं. ठीक है. Then another one, yes, ये भी देख के जाइएगा. अक्षय वॉज डिनाइड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. डिस्कस द रेमेडी अवेलेबल. सो यहाँ पे एक केस स्टडी के जैसे एक पर्सन को डिनाई किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है. वेल, इफ दैट पर्सन को एम्प्लॉयमेंट डिनाई की है ऑन द ग्राउंड्स दैट वो कहाँ पे बॉर्न हुआ है, तो वो डेफिनेटली आर्टिकल 16 यूज करते हुए अपना एक एप्लीकेशन डाल सकता है सुटेबल हाई कोर्ट में कि उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है. ओके, सो दैट कैन बी यूज्ड. देन यस, ये स्टडी करके जाइएगा. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. सी, आर्टिकल्स अपने आप में प्रोहिबिट करते हैं फंडामेंटल राइट्स. दैट इज आर्टिकल इज मोर अ प्रोहिबिशन रादर देन अ फंडामेंटल राइट. सो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज यूज्ड, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो लोग काफ़ी सारे टाइटल्स दिया करते थे, जैसे सर, राय बहादुर, राय साहेब, नाइट वगैरह, ऐसे टाइटल्स दिया करते थे. एंड दीज टाइटल्स वर क्रिएटिंग अ क्लास इन इटसेल्फ. So to do away with the practice, now Article 18 provides no title, not being a military or academic distinction, can be conferred by the state. हर स्टेट अपने हिसाब से चलाएगा, लेकिन वो किसी को भी टाइटल नहीं देगा. मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शंस में टाइटल दिए जाते हैं, जैसे अगर आप पीएचडी करते हो, डॉक्टर बनते हो, वो सब टाइटल अलग होते हैं. लेकिन स्पेशली किसी पॉलिटिकल पर्सन या किसी सेवादार को ऐसे कोई स्पेशल टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हर स्टेट कोई ऐसा टाइटल नहीं देगा. इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल मेक द डिसीजन इन दैट रेस्पेक्ट. No citizen shall accept any title from any kind of foreign state also. No person who is not a citizen of India, while he holds the office or trust under the state, except without the consent of the President of India. Okay, then no person holding any office or place or trust on the state without the consent of the president or emoluments will accept a title. Matlab, in short, you need the consent of the president or that of the government before accepting title. And however, framers of the constitution did not intend that the state should not officially recognize merits. तो जहाँ पे भी मेरिटोरियस काम हुआ है वहाँ पे टाइटल देना बनता है. इसलिए आपको नेशनल अवार्ड्स दिखते हैं, स्टेट बेस्ड अवार्ड्स भी दिखते हैं. देखो, टाइटल काम के लिए दिया जाए ठीक है, बिना काम के टाइटल का कोई मतलब नहीं बनता. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, डू रीड this one also, okay, or this one. The freedom of speech and expression is guaranteed, or none of the fundamental rights to the freedom is absolute. Okay, so freedom of speech and expression है, हम हर कोई बात करने की, अपने व्यूज को रखने की एक फ्रीडम इंजॉय करता है. इसीलिए आपको आज सोशल मीडिया दिख रहा है. ओके, so Article 19(1)(a), the right to speech and expression includes the right to make good or bad speech, even the right not to speak. So one can express oneself even by signs, and this includes the freedom of the press, the right to publish one's opinion, the right of circulation, propagation, the freedom of a peaceful organization, or any kind of dramatic performances also. And this freedom includes the freedom of the press. However, no special privileges is attached to the press and the distinction from the ordinary citizen. It was also observed that the freedom of speech and that of the press lays the foundation of the democratic organization. So अगर हम लोग freedom of speech रखते हैं, इसीलिए आज organizations democratic natures में हैं. लोग अपने views रख सकते हैं, foundationally हम एक दूसरे के लिए बातचीत कर सकते हैं. ये freedom of speech ही है जो हम अपने एजुकेशन भी इम्पार्ट कर सकते हैं, लोगों से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को. एंड ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बैन लगाना, अनलेस देयर इज
adversely affecting certain rights, fundamental rights को रोकना allowed नहीं है. And that's what it was said. The right to freedom of speech is infringed only by the direct ban on circulation or publication, but also by action of the government, which would adversely affect the circulation of the papers. And regarding the commercial advertisement, it was held that they do not fall in the protection of the freedom of speech and expression, and such advertisement have the element of trade, and commercial advertisement does not aim in furtherance of. तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में जो भी चीज़ें कही जाती है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के बाहर है. यहाँ तक कि regarding later the perception about advertisement changed, and it has held that commercial speech is a part of the freedom of speech and such can also be subjected. तो उसके बाद फिर ये दूसरे केस में ये बोला गया कि yes, now even a freedom of speech will be applicable to the commercial advertisement. फिर आप डिस्कस कर सकते हो dramatic performance is also a form of speech and expression. Censorship on films, including pre-censorship, is justified restrictions. तो फिल्म्स में दिखाने वाली चीज़ें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है, लेकिन सेंसरशिप जहाँ पे सूटेबल हो वहाँ पे इम्पोज की जा सकती है. एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? वेल, रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज the state may impose reasonable law on freedom of speech and expression in name of sovereignty of India, security of the state, friendly relations with the state, public orders, decency, moralities, contempt of the court, defamations, incitement to the offences, and such things. And reasonable restrictions can be allowed. Reasonable restrictions can be imposed also. तो ये कुछ बातें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हिसाब से ज़रूर याद करके जाना. And yes, do read this one also. The case is that an organization of a business community is engaged in processions, demonstrations, agitations before the secretariat of the state government on a busy road to press for their demands. This caused traffic jams. The state government imposed a ban on the demonstration and marches on the busy road on working days. The organization alleged that the ban was infringement of the fundamental right of freedom as guaranteed under the Constitution. So what do you think? Is this correct? Well, Article 19(1)(b), that gives the right of citizen to assemble peacefully without any arms, as you can see. Yeah, this is out. Without any arms. However, apart from the fact that peaceful assembly and without arms, the state is also authorized to impose certain reasonable restrictions in the name of sovereignty and integrity of India, in the name of public order. And as the fact goes that the organization of the business stage of protest, processions and demonstration and agitation. So this has caused traffic jam. A ban is demonstration is valid and the petition will be rejected by the High Court. Why? Because ये public order और decency और moralities को affect कर रहा है, तो ये अपने आप में maintainable नहीं होगा. ठीक है? Then about Article, yes, this one, Article 19(1)(g), question number 30. 19(1)(g) talks about that the Constitution of India provides all citizens have the right to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. Explain. So उस time पे 8 marks से लिखा, तो what is this 19(1)(g)? Well, 19(1)(g) guarantees that all the citizens have freedom of right of profession or to carry out any kind of operation. However, this freedom is not an absolute. It is also subjected to certain reasonable restrictions. Okay, and the state also has powers to restrict the enjoyment of the freedoms. It can be limited by imposing reasonable interest also. Well, the state's powers to restrict the enjoyment of these freedoms is limited to making any of the imposition reasonable in the interest of the general public. And they can prescribe professional or technical qualifications for practicing the profession, for carrying out the state of the corporation owned by the state or any kind of trade or commerce. तो suitable restrictions डाले जा सकते हैं किसी प्रोफेशंस के ऊपर, जैसे किसी कोर्सेज में डाले जाते हैं, या अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रेड एंड बिजनेस में सूटेबल रिस्ट्रिक्शन जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह डालने हैं तो वो डाले जा सकते हैं, बट वो रीजनेबल के अंदर होने चाहिए. दे शुड डिफाइन इन द रीजनेबलनेस, एंड रिस्ट्रिक्शन सूटेबल होने चाहिए. ये रिस्ट्रिक्शन वर्ड जो है अपने आप में सफिशिएंटली वाइड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. ओके, तो बेसिक लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज अलाउड, बट अ प्रिंसिपल जो आपको दिमाग में रखना है,
that there has to be a balance between the articles 19 subarticle 1 clause G and social control. So restriction अपने आप में excessive nature में नहीं होना चाहिए, ठीक है? And yes, do read this one also. A foreign national will not succeed. Okay, sorry. Question is, a foreign national applied for the permission to establish an industry for manufacturing shoes. The permission will refuse the competent authority. The foreign national filed the writ petition challenging the order of refusal that in India the person guarantee freedom of trade. So एक फॉरेन नेशनल इंडिया में शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग ले डाउन करना चाहता है और ये परमिशन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ की है, तो वो बोलता है इंडिया में तो फ्रीडम है. See, the foreign national will not succeed. The six fundamental rights of 19 are available to citizens of India only. ये हमने बाहर वालों को राइट्स नहीं दिए हैं. आर्टिकल 19 के राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स है. A foreigner is not a citizen of India and therefore cannot have the fundamental rights. वो अपने पास कोई फंडामेंटल प्रैक्टिस, फंडामेंटल राइट्स टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. So this petition has to be rejected. Okay, then okay, yeah, do like this one also. The government of Madhya Pradesh passed a law prohibiting manufacture of BDs in the villages during the agricultural season. No person residing in the village could employ any other person or engage himself in the manufacture of BDs during the agriculture season. The objective of the provision was to ensure adequate supply of labor for agriculture purpose. BD manufacturer could not even engage labor from the outside the state and so had to suspend the manufacturing of BDs. And even villagers incapable of engaging agriculture, like the old person, women and children, are supplemented in their income by engaging themselves in BDs, which prohibited without reason. Whether the law passed by Madhya Pradesh is constitutionally valid? A very good question. Okay, again coming from Article 19(1)(g). तो यहाँ पे आप बता सकते हो the 19(1)(g) Constitution guarantees all the citizens right of practice and profession. हर किसी citizens को अपना right of practice है, profession है, पर ये right अपने आप में absolute नहीं है. And such freedom is not absolute but subject to reasonable restrictions as can be imposed by the state. However, such restriction must be reasonable and can be imposed only by duly enacted law and not by executive action. आप notification circular से इसे रोक नहीं सकते. You have to give a proper reason. And the facts of the case is that of Chintaman Rao versus State of Madhya Pradesh. जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द लॉ प्रोहिबिटिंग मैन्युफैक्चर ऑफ बीडी इज अनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यस, राइटली, ये अपने आप में इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोहिबिट करता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन. एंड द लॉ विच इज पास बाय द गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड इन नेचर. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था. देन अनदर केस जो आप यहाँ पे पढ़ के जाना, दैट इज दिस वन. That is, Vijay is an accused committed an offence of dacoity in 2050. At that time, the dacoity was punishable with imprisonment of 10 years. In 16, during his trial, the law was passed which made dacoity punishable with life imprisonment. And the penalty would be applicable, which penalty would be applicable, and discuss the answer. So, ये था Article 20 सब Article 1 ex post facto law के बारे में बातचीत कर दी. ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except violation for the law in force at the time of the commission of the act where the offense, and nor be subjected to any penalty which is greater than that might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense. ये था law. So यहाँ पे ex post facto law की बात हो रही है. Ex post facto law which is punished which has been lawful. If a particular act was not an offense according to the law of the land at the time it was done, then he cannot be convicted retrospectively with that. बराबर. So even the penalty of the commission of the offense cannot be increased retrospectively. बराबर. In the given case, the committing dacoity in 2015 was 10 years and Vijay commits dacoity in that year. बराबर, तब वो पकड़ा गया था. So by a law passed by after committing his dacoity, punishment for his act cannot be increased to a life imprisonment because the punishment
cannot be inserted retrospectively. Okay, so remember this, another good judgment. Then इसके साथ साथ yes, coming to this one, तो इसमें ये पढ़ के जाना, no person can be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Article 21 बहुत ही important articles में से एक है. So what is Article 21? Well, Article 21 बोलता है, that is this one, protection of life and personal liberty. It guarantees one person one of the most important fundamental rights. It says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. फिर आप आंसर में लिख सकते हो, the right to life includes the right which makes the life more meaningful. Which makes the life more meaningful. For example, the right to adopt a son, the right to live with a dignity, the right to live in freedom from noise pollutions and all this thing. And refusal of this application to enter into a medical college cannot be affecting the personal liberty. Article 21 अपने आप में वाइड इनफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे यूज हो जाए. Okay? In Sawan Singh Swahai versus APO, it was held that the right to travel includes within the expression of personal liberty and therefore no person can be deprived. A very good judgment. हर किसी को ट्रैवल करने का हक है और लॉ उसको रोक नहीं सकता अनलेस अनटिल उसने कोई क्राइम किया हो. तो प्रोसीजर ऑफ लॉ है. ओके, एंड सिंस द पासपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट, द डिनायल ऑफ द पासपोर्ट अमाउंट्स टू deprivation of the personal right. In the absence of any procedure prescribed by law of the land sustaining the refusal of passport, its refusal amounts to unauthorized deprivation. तो अगर किसी पर्सन को पासपोर्ट विदाउट असाइनिंग प्रॉपर रीजन नहीं दिया जा रहा है किसी पर्सन को पासपोर्ट्स, तो इन दैट केस वो आर्टिकल 21 में चैलेंज कर सकता है. ओके, अनदर थिंग दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये वर्ड्स का मतलब क्या है? The expression procedure established by law means procedure laid down by a statute or a procedure prescribed by the law of the state. It can be a statute-based procedure or the law of the state. Accordingly, the first, there must be a law justifying interference with the personal life and liberty. And secondly, the law should be valid. And thirdly, the procedure laid down by law should have strictly followed. So it should be a lawful procedure. It should be validly exercised. It should be done with a strict fairness, just and reasonable sense. Okay, then protection, yeah, this one, detention of a person without trial being draconian in nature, state the basic safeguards provided by the Constitution of India against the preventive detention. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अपने आप में भी आर्टिकल 22 बहुत ही फेमस एरिया रहा है, तो प्लीज एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाइएगा. तो व्हाट इज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन? Well, preventive detention means a detention of a person without trial. So बिना उसको कोर्ट में डाले आप किसी को डिटेन करके रखते हो जबरदस्ती, that is preventive detention. And the object of preventive detention is not to punish a person for having done something, but to intercept him before he does something. कुछ गलत करने से पहले उसको पकड़ लेना. And फिर आप ये भी लिख सकते हो कि no offense is proved nor any charge is formulated, yet a person can be detained because that person is likely to commit some offense which is committed in law. So preventive detention हो सकता है. Okay, then discuss this, the protection against arrest and detention in certain cases. So what is the kind of protection? Well, a person who is arrested cannot be detained in custody unless he is informed as soon as maybe of the ground of arrest. वो क्यों arrest किया गया? And such person shall have the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. And the person who is arrested and detained must be produced before the nearest magistrate within 24 hours, excluding the time taken for journey. And such person shall not be detained in a custody beyond 24 hours without the authority of the magistrate. So अगर आप किसी का भी detention करना चाहते हैं for 24 hours, it's allowed, but beyond that you cannot do it. Clear? And safeguard against the preventive detention. No law providing for preventive detention shall authorize the detention for a longer period than 3 months. अगर आप किसी को अरेस्ट करके रखना चाहते हो और अगर आपके उसके खिलाफ कोई चार्जशीट, कोई केस नहीं बनता, तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता. पर उसके लिए
उसके लिए। अगर आपको उसके ज़्यादा भी चाहिए तो एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन हु आर और हैव बीन or qualified to be appointed as the judges of the High Court has reported before the expiration of the set period of 3 months that there is sufficient grounds for detention. So, if the judges of the High Court are convinced that there is a requirement of detention for a longer period, only then that detention can be allowed. And such person is detained in accordance with the provisions of the law made by the Parliament. Okay. Secondly, when any person is detained under the law providing for preventive detention, the authority making order as soon as may be communicated on the grounds which has been informed. So, किस बेसिस पे उसका डिटेंशन हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें उसको बतानी चाहिए. ठीक है. Then another question, yeah, this one. India is a secular state, and explain the provision of Constitution of India. तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. ओके. आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से व्हाट इज द राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी काइंड ऑफ रिलीजन्स, और उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या है. ये पार्ट आर्टिकल 25 में आता है. इसके आंसर को डिस्कस करते समय आपको ये बताना है कि व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन. तो जब आप एक फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात करते हो, आप अपने हिसाब से रिलीजन की बात करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वालिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस देता है. आप अपनी तरफ से रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगाड़िया, एंड उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड के बारे में बोला गया था. सेक्युलरिज्म मीन्स एक स्टेट शुड हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर इंसिस्टेंस नहीं होता. हर किसी को अपना रिलीजन एक्सरसाइज करने का राइट होता है. ओके. तो स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. स्टेट अपने रिलीजन्स को अलाउ करता है, पर्सन्स को अलाउ करता है अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने. यहाँ तक कि वो एश्योर भी करता है हर स्टेट के दे विल मेक लॉज जो फ्री होंगे. हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने का पूरा हक है. एंड दिस फ्रीडम इज नॉट कन्फाइंड टू किसी सिटीजन का या किसी पर्सन के ऊपर. ओके. But remember, so special rights has been accorded to certain persons of certain areas also. तो वो rights भी उनके हिसाब से दिए जा सकते हैं. It gives every person a right of freedom of conscience, a right to practice and propagate particular religion. And this freedom has a subject to certain restriction also. In case of public order, morality चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे कई religious practice को रोकना पड़ा था क्योंकि situation वैसी थी, या फिर anything that affects the part 3 of the Constitution of India. Okay, that affects the part 3 of the Constitution of India. Any law उस टाइम पे जो रेगुलेट करता है पर्टिकुलर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल को, नेचर को देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस डाले जा सकते हैं, या फिर सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस डाले जा सकते हैं. Now, freedom to manage a religious affair, आर्टिकल 26 बोलता है कि हर किसी के पास एक फ्रीडम है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, उसके हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करने का, उसके हिसाब से चीज़ें एस्टैब्लिश करने का, उसके हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्वायर करने का, एडमिनिस्टर करने का, एज पर द लॉ. आर्टिकल 27 बोलता है कि इस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कोई भी टैक्सेशन, दैट इज फ्रीडम ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन बेस पे टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जा सकते. आप किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते तुझे इतना इतना टैक्स पे करना ही पड़ेगा. हर किसी के पास एक फ्रीडम है अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दे सकता है. आर्टिकल 28 इसको अलाउ करता है. लेकिन कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए जो स्टेट के हिसाब से सही नहीं हो. ओके. तो स्टेट अगर वहाँ पे सर्टन प्रोहिबिशंस डालना चाहे तो डाल भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट. ओके. पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटीज को देखते हुए. एंड कोई भी पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, ओके, कोई भी पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो भी स्टेट से फंड्स रिसीव करता है, दे शुड नॉट बी एक्टिंग इन सच अ नेचर जो पूरी तरह अफेक्ट करे स्टेट के राइट्स को. इस चीज़ का ध्यान रखने का. हर किसी को अपने रिलीजन के हिसाब से वर्शिप करने का भी पूरा हक होता है, तो वो रेगुलर रिक्वायर वर्शिप्स कर सकते हैं. यहाँ तक कि जो गार्डियंस है वो अपने माइनर्स को भी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन और द प्रैक्टिस के हिसाब से चीज़ें सिखा सकते हैं. तो ये सब चीज़ों के ऊपर कोई प्रोहिबिशंस किसी भी नेचर का इम्पोज नहीं किया जा सकता. ओके. क्लियर. तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. पढ़ के जाइएगा. एंड आगे क्या, वेल
आगे उसके साथ साथ डू दिस वन, अमेनेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो। वेल, इसके ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। एलिमेंट्री क्वेश्चन इज इन द कंट्रोवर्सी वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। तो क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? वेल, इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में आया था, उसके अंदर ही समझना होगा। शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उठा था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चैलेंज इस ग्राउंड के कि क्या आप फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकते हो। Supreme Court held that the power to amend Constitution, including fundamental rights, in 368, and the amendment is not a law within the meaning of 13(2). Amendment is valid even if it abridges fundamental rights. तो स्टार्टिंग के तौर पे ये ओपिनियन लिया गया था। फिर आया था एक और सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट, एंड दैट वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन लिया अपने ही शंकर प्रसाद के डिसीजन को ओवररूल करते हुए कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, okay, fundamental rights are outside the amendatory process of the amendment taken away, and Article 368 merely lays down the procedure of amendment, and the court said that the amendment in law under 32 of India, and if it's violate any fundamental rights, it has to be declared void. So fundamental rights के amendment को scope से बाहर रखा है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स को बताता है, फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में बातचीत नहीं है, और इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स का एक अलग था। फिर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ गोलकनाथ केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से एक और केस हुआ था, दैट इज 24th अमेंडमेंट डाला गया था 1971 में, जहां पे आर्टिकल 13 एंड 368 को 368 के पास को कम किया गया था। उस बारे में एक और फेमस जजमेंट, बहुत ही फेमस जजमेंट था, केशव आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट। ये जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया कि 24th constitutional amendment can amend the part of the constitution but including fundamental right, but the court made it clear parliament cannot alter the basic structure. So ये अपने आप में एक यूनिक केस था कि आप फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर सूटेबल बेसिक स्ट्रक्चर्स अमेंड नहीं कर सकते। ओके, तो सूटेबल बेसिक स्ट्रक्चर्स को अमेंड करने का कोई हक नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये भी अपने आप में एक जोरदार जजमेंट था। To neutralize the effect of limitation, फिर एक 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, और 368 में न्यू क्लॉज डाला था that no amendment of the constitution shall be questioned in any court. ये पार्ट सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा जोरदार लगा कि ये चीज़ आप किस तरीके से डाल सकते हो इस फ्रेमवर्क के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पॉइंट उठ के आया कि क्या ये पार्ट 42nd अमेंडमेंट सही है, और इसका चैलेंज आया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो यस, ये कुछ एक जजमेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, सज्जनी, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती एंड मिनर्वा मिल्स। तो मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यूनानिमसली दैट 368 and 55 of 42nd amendment such unconstitutional and transgressing the limits of the past. तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लॉ अपने लिमिट्स के बाहर जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वैलिड नहीं है। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द टच स्टोन फॉर विच द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी जज। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता। ओके, एंड the core constitutional overreaching principle of secularism, egalitarianism, equality fall outside the amendatory powers of Article 368. So that is, these things do fall outside the scope of Article 368 of the fall. And that was another case, that is Glencock Estate versus State of Tamil Nadu, जिसमें इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर्स आप अमेंड नहीं कर सकते। तो इस तरह कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड वाला क्वेश्चन टैकल करना। Yeah. Then another question that you can do is this one. Yeah. Fundamental duties क्या है? हमारे आर्टिकल 51A of the Constitution define fundamental duties. तो ड्यूटीज के हिसाब से याद रखना, we have to respect the national flag and national anthem. We have to cherish the noble ideas of national struggle. We have to protect the sovereignty, unity and integrity of India. We have to defend the country
and render national services. We must promote harmony and spirit of common brotherhood. We have to value and preserve the rich heritage of India. We have to protect and improve the natural environment, all forest, lakes, wildlife. We have to develop scientific temper and humanisms. We have to safeguard the public property. We have to strive towards the excellence and provide opportunity for education of one's child and between the age of 6 to 14 years. So these are the fundamental duties that is casted upon us. Okay, then हाँ ये वाला क्वेश्चन भी देख के जाइएगा. When a governor cannot issue ordinance without the instruction of the president. तो governors का ordinance making powers वो article 213 में cover होता है. That is, governor has a power to make ordinance, and that is a power which is derived from article 213. Okay, and governor can make ordinance on the state-based legislature in either of the two houses of the state, and it has to be satisfied the basic necessity of immediate action. That is, the action is required in the particular given circumstances. Okay, then ordinance making power, well ठीक है, the governor has following peculiarities. एक ordinance जो governor promote करता है वो आर्टिकल बोलता है it should have the same force of act, and the ordinance must be laid before the state legislature, and while exercising that the government must act on the advice of the council of ministers. Okay, but following cases the governor cannot promulgate an ordinance. एक तो a bill which is containing the same provision as stated in the under the previous sanction of the president, उसके ऊपर गवर्नर लॉ नहीं बना सकता, ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता. And he would have to be deemed if necessary the bill containing the same provisions of the president. अगर गवर्नर को लगता है कि किसी ऑर्डिनेंस में वही प्रोविजन है जो एक बिल जो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, तो गवर्नर उस पर लॉ नहीं बनाएगा. An act of the legislature of the state containing the same provision under this constitution have been invalid unless it has been reserved for the consideration. तो जहाँ पे भी गवर्नर को लगता है कि ये पॉइंट ऑफ लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर अ प्रेसिडेंट टू कंसिडर, तो गवर्नर उसके ऊपर लॉ नहीं बनाएगा बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो उस पार्ट को देख के जाना, प्लस इसके साथ साथ यस दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आर द फॉलोइंग वैलिड, गिव रीजंस. A law of the parliament on a subject matter enumerated in the concurrent list on which the law of the state already exists, and a law on the subject matter enumerated in the concurrent list on which the parliamentary law exists. So यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है. पहला ये है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है ऑन अ मैटर स्टेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ओके, तो अपने को ये बताना है कि क्या अपने आप में ये वैलिड है. well, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि with respect to the subjects which are stated in the concurrent list, the parliament and the state legislature both have the powers to make the law. Thus, both can make law with respect to the same subject matter, and it will be valid in so far unless they are repugnant to each other. So, when there is a conflict between such laws, the law which is made by the parliament will prevail over the law which is made by the state legislature, and the latter will be valid only to the extent it is repugnant, it is not following the formal law. Okay, repugnant मतलब उसके साथ वो challenging position पे आता है. ठीक है, and then the other question is a state law on the subject enumerated in the concurrent list when the parliament, तो किसी subject पे parliamentary law exist करता है and state law उस पे बन रहा है, तो क्या वो अपने आप में validity रखता है? Well, if there already exists a parliamentary law on the subject matter and that thing is stated in the concurrent list, the state also have the jurisdiction to make the law on that matter, and state can do so provided it has reserved those considerations of the President of India and the assent thereto, and such law can prevail in the state over the law of the parliament if there is no conflict of law. And in parliament law has and the Parliament can be granted, Parliament can get rid of such law anytime by passing a new law. So Parliament can write off this law of the state if they find it is affecting the parliamentary laws. ठीक है, तो इसके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हो. प्लस इसके साथ साथ
Question 63. Discuss whether the law which is made by the parliament with respect to subject matter in the state list made applicable to the state is valid. तो क्वेश्चन अच्छा था कि law which is made by the parliament with respect to the subject in the state list and made applicable to state, is it valid? Well, actually ये valid नहीं होता क्योंकि state legislature अपने exclusive powers में अपने law बना सकता है और state list के ऊपर state ही law बनाएगा, ये पार्ट काफी क्लियर है। लेकिन कुछ एक ऐसे एरिया है जहां पर पार्लियामेंट सिस्टम भी लॉ बना सकता है। वो सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर वो नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, आर्टिकल 240, तो पार्लियामेंट हैज पावर्स टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स इन स्टेटेड इन द स्टेट लिस्ट, provided if the largest Rajya Sabha representing 2/3 of the voting rights approve this, okay, then the resolution can be passed, okay, और अगर ऑर्डिनेंस पास किया गया है तो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी effectively होगी। Then if there is a matter of emergency, article 250 is article 250 कि स्टेट अगर चाहे इमरजेंसी सिचुएशन में पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है, पर ये लॉ फिर 6 मंथ से ज्यादा वैलिड नहीं रहते। देन ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 or more states, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more states, दैट इज 2 स्टेट्स के बीच में किसी बात से झगड़ा है, किसी बात से डिस्प्यूट्स हैं, तो अगर उस रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए लॉ बनाना चाहे तो लॉ बनाया जा सकता है। ओके, वो डिस्प्यूट को सेटल करते हुए, भले वो 2 स्टेट्स के बीच में आपस का डिस्प्यूट्स हो, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट है कि पार्लियामेंट्री लॉज के बारे में बने। देन टू एनफोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एनफोर्स करने के लिए या किसी ट्रीटी या किसी एग्रीमेंट या किसी कन्वेंशन को एनफोर्स करने के लिए उसे स्टेट के जुरिस्डिक्शन में जाना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट सूटेबल लॉ वहां पे भी बना सकता है। एंड यस, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर पार्लियामेंट को लगता है स्टेट्स में जो झगड़े हैं इतने बढ़ गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं करी, तो दे कैन मेक द लॉ इन दोज रिस्पेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, एंड यस, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, व्हाट इज द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ओके, व्हाट इज द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस मतलब ये देखना होता है कि क्या एक लॉ दूसरे लॉ को इस तरीके से ओवरराइट कर रहा है कि स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ के ज्यूरिसडिक्शन में घुस रहा है, या सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ के ज्यूरिसडिक्शन में घुस रहा है इस तरीके से कि पूरा का पूरा लॉ ओवरराइट हो रहा है, या एक छोटा सा पार्ट, ये जानना होता है। ठीक है, द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो यहाँ पे द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मीन्स दैट एक लॉ, वेयर अ लॉ इन रियलिटी एंड द सब्सटेंस फॉल्स इन द आइटम ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो, एक लॉ इस तरीके से है जो पार्लियामेंट्री लिस्ट में फॉल करता है, लेकिन अगर वो एक लॉ दूसरे ब्रांच ऑफ लॉ को टच करता है, टू व्हाट एक्सटेंट इट टचेस, ये देखना होता है। क्या उसके दूसरे लॉ के, स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ, तो क्या दूसरे लॉ का सिर्फ एक सेक्शन वायलेट हो रहा है, या पूरा का पूरा एक पार्ट वायलेट हो रहा है, या पूरा का पूरा लॉ वायलेट हो रहा है, ये जानना होगा। ठीक है, एंड एंट्री 6, एग्जाम्पल के लिए एंट्री 6 lays down public health and sanitation. Rajasthan legislature passed a law restricting the use of sound amplifiers. The law was challenged on the ground that it was dealt with the matter which is filed in 81 of the list 1, that is post and telegraph telephones broadcasting, and the state legislature is not. तो राजस्थान गवर्नमेंट ने नॉइस पॉल्यूशन को देखते हुए एक लॉ पास किया था, लेकिन इस बात में चैलेंज किया गया कि ये एंट्री लिस्ट 1 में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट on the ground that the object of the law was to prohibit unnecessary noise affecting the health and public and not for broadcasting. So ये लॉ अपने आप में वैलिड है, क्योंकि इसमें जो एस्पेक्ट था, जो पर्पस था, वो हेल्थ पर्पस के लिए था, न कि ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए। सो इसलिए ये देखना होता है कि अगर कोई लॉ पास हुआ है तो किस पर्पस के लिए पास हुआ। और ये भी पढ़ के जाना, व्हाट इज द रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, दैट इज व्हाट यू कैनॉट डू इनडायरेक्टली, व्हाट यू कैनॉट डू डायरेक्टली। तो यू कैनॉट डू इट इनडायरेक्टली, व्हाट यू कैनॉट डू डायरेक्टली, उस बेसिस पे ये बना है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन किस चीज को प्रोपोगेट करता है?
वेल ये इस बात को प्रोपोगेट करता है कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली किसी मैनर से नहीं कर सकते। तो जो स्टेट एक डायरेक्टली किसी चीज़ पे लॉ नहीं बना सकता, वो इनडायरेक्टली उसके ऊपर लॉ बनाए, वो सही नहीं होगा। ओके, एंड सच लेजिस्लेशन इज कॉल्ड कलरेबल लेजिस्लेशन. For example, railway is subject matter of union list. Only parliament has power to make the law. If any state makes a law pertaining to railway, it will be invalid because ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के jurisdiction में रेलवे आता है. Okay, so इस चीज का ध्यान रखना. Fine, this was a good question. And then, हाँ, do read this one. Write a short note on constitutional remedies. So हम अब आ रहे हैं writs के jurisdiction में. What are the constitutional remedies which is conferred by various writs? तो writs jurisdiction में क्या क्या remedies है वो देखने के हिसाब से, ठीक है. So यहाँ पे article 226 every high court has a power to issue directions to issue writs. तो हर एक हाई कोर्ट रिट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है आर्टिकल 32 में. हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के रिट्स होते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी, को वारंटो, जो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं. ये हर एक रिट बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं और ये थ्रू आउट द टेरिटरी, जहाँ पे हाई कोर्ट है पूरे स्टेट को लगेगा, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में इन्फोर्स कर सकता है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसे रिट जुरिस्डिक्शन भी बोला जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए ये बनाया जाता है. तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. उसके साथ साथ ये वाला रिट जरूर पढ़ के जाना, दैट इज दिस वन. रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? Well, writ of mandamus. The mandamus literally means we command. The writ of mandamus is a command by the Supreme Court. We command. जैसे हम जैसे बोलेंगे वैसा चलेगा. तो it's a command by the Supreme Court, High Court to the particular section or to the particular department कि तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा. Some important points are writ of mandamus can be issued against public authority only. तो ये किसी private authority का subject नहीं है. It has to be given to the public authority only. The petitioner must have the legal right to compel the performance of a legal duty. The writ mandamus cannot be issued against the private persons. Okay? Mandamus does not lie against the president or even the governor. And the writ of mandamus cannot be issued in the matter of discretionary powers of the public. तो जो चीज़ें पब्लिक अथॉरिटी अपनी मर्जी से कर सकती है उसमें मैंडेमस आप फोर्स नहीं कर सके कि तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी मर्जी. जो उन्हें करना चाहिए और वो नहीं कर रही, तब आप मैंडेमस एनफोर्स करवा सकते हो. ओके, अनदर वन, डू रीड दिस वन. रिट ऑफ सर्शोररी. सर्शोररी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट्स और अथॉरिटी को पूछते हैं व्हेन दे एक्सरसाइज द एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन और वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फंडामेंटल. कि कोर्ट से ये गलती कैसे हो रही है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन को भूल रहा है या फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर रहा है, तो ये इसके बारे में पूछते हैं. ओके, so when writ of certiorari is issued, so where the court authority acted without jurisdiction, तब ये writ आती है. There is an error of law which is apparent on the face of the records, तब ये writ आती है. The inferior court acted against the principle of natural justice, तब ये writ आती है. And Supreme Court can issue writ of certiorari to any high court on erroneous decisions also. And this writ of certiorari and prohibition have common features. One fundamental distinction is prohibition can be issued before the completion, whereas certiorari is after the completion. तो किसी ने अपना jurisdiction गलत एक्सरसाइज किया तब certiorari. कोई करने वाला है तो आप prohibition लेते हो कि ऐसा मत कर. ठीक है? Then do read this one. What do you understand by writ and when and by whom the writs can be issued? या फिर you can read this one also. डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226 के हिसाब से. वेल, रिट का मतलब क्या है? वेल, रिट मीन्स अ रिटन ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू एनी पर्सन और एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, okay, an inferior court, and according to the constitution, supreme court and high court in different cases can issue different kind of writs also. Clear? There are 5 kind of writs: a habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. Supreme Court can exercise writ in Article 32 and High Court in 226. The power of the High Court is much wider than the Supreme Court. Supreme Court can issue writs only for enforcement of fundamental rights, but High Court can issue writ for any other purpose also. Clear?
Res judicata, petition to the Supreme Court and High Court under 32 and 226 are subject to the rules of res judicata. That is a rule कि एक बार एक क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन हो चुका है तो सेम क्वेश्चन को सेम पार्टीज वापस से रीओपन नहीं कर सकती. However, the writ of habeas corpus is the exception to res judicata कि भले एक पर्सन के अरेस्ट के ऊपर डिसीजन हो चुका है लेकिन उसके अरेस्ट के बारे में अगर नए फैक्ट्स या कुछ भी डिसीजन हो वापस से उसको ओपन किया जा सकता है. ठीक है. एंड या दिस वन, व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और उसके लिमिट्स क्या है? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब एक सुपीरियर अथॉरिटी से इंफीरियर अथॉरिटी को जब लेजिस्लेशन डेलीगेट किया जाता है, दैट इज डेलीगेटेड. यहाँ पे डेलीगेटेड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मीन्स रूल मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट. तो एक्ट एंड पार्लियामेंट में कोई रूल बनाया है और इस लॉ मेकिंग रूल के हिसाब से आप किसी को अपने पास डेलीगेट कर रहे हो. द स्टैट्यूट विच डेलीगेट सच पावर इज कॉल्ड एनेबलिंग स्टैट्यूट. ये एक के पीछे जो हायरार्की बैठती है इस तरह से डेलीगेशन होगा उसको एनेबलिंग स्टैट्यूट बोलते हैं. Delegated legislation is permitted under the Constitution by rules, regulations, or orders and bylaws. So, rules, regulation, orders and bylaws के through legislation अपने पास को delegate कर सकता है. Okay. Now, the legislation is either supreme or subordinate. Supreme legislation that proceeds from the supreme or sovereign law. तो जो law से अपने पास को derive करता है वो supreme legislation है. वो सुप्रीम लेजिस्लेशन के नीचे आता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सोवरेन पास के नीचे अथॉरिटी को दिए गए पास की बात करता है. ये डिपेंड करता है उस पास को अगर दिए गया है कि नहीं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैसे होता है? वेल, दीज आर एग्जीक्यूटिव बेस्ड लेजिस्लेशन जहाँ पे मेन फंक्शन एग्जीक्यूटिव का टू एनफोर्स सर्टेन राइट्स एंड केसेस. देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के डिपार्टमेंट को पास दिए जाते हैं. देन देयर आर जुडिशियल नेचर. That is, high courts authorize certain rules and procedures to be followed by different courts. उसके हिसाब से हाई कोर्ट्स पे अपने पास डेलीगेट करता है. Then there are municipal authorities which are entrusted with the powers of special laws, limited and subordinate powers of establishing. तो municipalities अपने पर्टिकुलर राइट्स के हिसाब से अपने लेजिस्लेशन को डेलीगेट करता है. फिर आप बता सकते हो ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं जो अपने रेगुलेशंस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को दिए गए पास वो डेलीगेट कर सकते हैं. एंड कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ये सब एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्ट है. तो कॉलोनीज वगैरह बनाते समय पुराने टाइम में उनको कुछ पास दिए जाते थे तो वो सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ में आते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन का पार्ट बनते हैं. सो टॉप मोस्ट लेजिस्लेशन इज द सुप्रीम एंड उसके नीचे आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट. ठीक है. Then, yeah, do read this one also. Article 16 of the Constitution guarantees opportunity to all citizens of India in matters of public employment. So again, Article 16 December 21 का question था. And Article 16(1), 16(2) constitutionally laid down करता है कि equal opportunity मिलेगी सबको. And Parliament will make a law with regard to the classes of the employment. And the government will lay down that किस तरीके का लॉ टेरिटरी बेस्ड, जोग्राफिकल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए बनाया जा सकता है. एंड दिस प्रोविजन कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर रिजर्वेशंस एंड अपॉइंटमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल. एंड पार्लियामेंट लॉज कैन बी मेड can make law basis of the reservations for promotion on seniority based, that is services में कौन किस लेवल पे जाएगा एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे किस तरीके से इस लॉ में फ़ायदा दिया जाएगा. प्लस उसके साथ साथ द स्टेट कैन कंसिडर अनफिल्ड वैकेंसीज. साल में कितनी वैकेंसी, अभी रिसेंटली भी आया था न्यूज़ में कि काफ़ी सारी वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलअप की है. स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है. So they consider the vacancies, may be given on reservation basis, may be given otherwise during the year, और वो कैसे फिल की जाएगी उन सब चीज़ों पे वो लोग ध्यान रखते हैं. ओके. एंड अगर कोई वैकेंसी एक साल से ज़्यादा 50% ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है तो सूटेबल वैकेंसी को फिल करने के लिए रिजर्वेशंस के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है. एंड देन अ लॉ
विल नॉट बी इनवैलिड अगर वो किसी भी पर्सन को जस्ट बिकॉज अगर किसी पर्सन को रिलीजियस या डिनोमिनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एब्सोल्युटली इनवैलिड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लॉ विच इज फ्रेम एंड पार्लियामेंट भी रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी एंड रिजर्वेशंस कैन बी मैक्सिमम अप टू 10% एंड गवर्नमेंट चाहे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जहाँ पे अनरिजर्व्ड कास्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी रिजर्वेशंस क्रिएट कर सकती है. तो दैट वाज सर्टेन एरियाज जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो. तो दैट वाज December 21 का क्वेश्चन. Another question, yeah, the parliament can make laws in the interest of public safety and social welfare. It imposes absolute right on criminal law. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये इस पॉइंट के ऊपर हिंट कर रहा है. दैट इज इट इम्पोजेस एब्सोल्यूट राइट ऑन क्रिमिनल लॉ. तो हमें क्रिमिनल लॉ को ध्यान रखते हुए इसका आंसर करना है. ओके तो यहाँ पे क्या क्या आंसर्स में आप ध्यान रखोगे. द लैटिन वर्ड मेंसरिया. देखो क्रिमिनल लॉ आता है तो मेंसरिया इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड. दैट इज इंटेंशन, नॉलेज, रॉन्ग डूइंग, उसके हिसाब से मेंसरिया डिसाइड होता है. और बेसिक प्रिंसिपल एक क्रिमिनल लॉ के अंदर ये है कि एक्टस फैसिट नॉन मेंसिट्रियम नीसी मेंसिट्रियम, कि जब तक किसी क्राइम के साथ उसके एक्ट के साथ उसका इंटेंशन साबित नहीं होता, गिल्टी माइंड साबित नहीं होता, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं. एंड द इंटेंशन एंड द एक्ट मस्ट कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम. ओके इंटेंशन भी चाहिए. There are many exceptional cases where mens rea is not required also, and many laws passed in the interest of the public and safety does not require. Yes, public safety laws and social welfare में mens rea जैसे element को नहीं देखा जाता. The absolute liability mens rea is not essential in licensing of shops, hotels वगैरह. तो अगर आप आपके लाइसेंसेस नहीं लेके जाते मोटर व्हीकल्स एक्ट में, आर्म्स एक्ट में, तो वहाँ पे मेंस रिया कैरी नहीं करता. अगर आप नहीं लेके गए तो नहीं लेके गए. यहाँ तक कि स्टेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट और सेडिशन केसेस में भी मेंस रिया काम नहीं करता. इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज्ड टू न्यूसेंस विद गिल्टी माइंड और विदाउट गिल्टी माइंड कैन बी पनिश्ड. स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे केसेस में जहाँ पे यू कैन से न्यूसेंस हो रहा है गलत तरीके से, वहाँ पे भी मेंस रिया को इग्नोर कर सकती है. ओके सो वो भी चीज़ें हो सकती हैं. And yes, this one. Examine how far the essential of federal polity incorporated in the Constitution of India. तो इसका आंसर लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि फेडरल पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ड्यूअल गवर्नमेंट है एंड ड्यूअल पावर्स है और पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन है. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे है. वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप को हमें फेडरल पॉलिसी की तरह है. और यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि इंडिया में द गवर्नमेंट्स आर एट डिफरेंट लेवल, द यूनियन एंड द स्टेट. ओके एंड वी हैव द पावर्स टू मेक लॉ विच इज सुटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सुटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से अपने लॉ बनाते हैं. यहाँ तक कि जुडिशरी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है. वो जुडिशल मैटर्स को डील करती है और इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस देती है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया जाएगा. इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड. ठीक है. एंड यस, डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, फिर भी 22 के क्वेश्चन में आया था तो याद रखना. बेसिक ड्यूटीज 51A के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ ड्यूटीज और ऑब्जेक्टिव यही था कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए. एंड these were the nature of duties that you can discuss. Yes. And last may you can discuss the case also. Since the duties imposed upon the citizens are not upon the states, the legislation, it is not necessary for the implementation. So हर एक state decide करता है किस तरह के duties implement करने हैं और किस तरह के नहीं. Okay. And Supreme Court in the case of AIMS Student Union versus AIMS, that though the fundamental duties are not enforceable by the court, they provide a valuable guide and aid to the interpretation of the constitution. ठीक है. तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस. नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा चैप्टर भी है पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए जहाँ तक हो सके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं.
प्लीज़ इन टॉपिक्स को ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम के हिसाब से, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।